Good evening and a very, very warm welcome each and every one. A big, big, big day for all of us. As they say, the shortest way of making a dream come true is to live them. हम भी एक ड्रीम देख रहे थे and there was an emotion attached with it, with our kids, with all those people who wanted to make it big, and someone who has really made it very big is in front of us. Prashant, a dear child, a 2 year course student who has achieved all India rank 11 today in IPM Indore. सबसे पहले तो प्रशांत मुझे ये बता हुआ क्या आज, and how does this surprise come to you? Right, sir. So first of all, like anyone else, बहुत ज़्यादा खुशी होती है. You expect to get in, और जब आप देखते हो कि something that you have dreamt of and that has actually turned into reality, so वो बहुत ज़्यादा खुशी देती है. So basically, I expected that the result they would be a lot more dramatic than it actually turned out to be. मैं सोचा था थोड़े से टेंशन होगी, थोड़े यानी माहौल बनेगा, ग्रुप्स पे आएगा टीजी पे कि रिजल्ट्स आर आउट, बट वैसे नहीं हुआ. I was just sitting in my balcony and I was scrolling through my phone, and then suddenly I see that there is a notification of mail my Gmail. Right? Usi ka. Right. Okay. So I see that there is a mail from IIM Indore which says congratulations, you have been given provisional admission. So pehle it takes time to register such an like immense thing. So pehle 5-10 seconds I was just blank, and then suddenly I checked it on the portal. I reassured myself कि हाँ finally हो गया है, and then ultimately I told my mother that हाँ हो गया है, selection हो गया है. So selection तो एक बात थी, but when you got to know that it's all India rank 11, I mean it's feeling of elation, ecstasy. What exactly happened? मतलब तुमको जब ये पता पड़ता है कि आप you're the 11th kid who is exactly getting that particular seat, and something for which you have been working so hard, so immensely. I think we all have been working so hard, so immensely, has actually now on your table. तो वो कैसी फीलिंग है? Because that is also something कि 2 साल से तुम मेहनत कर रहे हो, हमने तुमको इतना क्लोजली देखा है. So let me tell you guys, each and every faculty of SuperGrads, each and every administrative department person of SuperGrads knows Prashant that well. हमने पूरी तरीके से हमारे बच्चों को उस तरीके से मेहनत करी थी. इनफैक्ट प्रशांत, इफ यू कैन हेल्प मी डिकोड दिस आल्सो, व्हाट वाज द फीलिंग जब ये ऑल इंडिया रैंक 11 था? राइट सर. सो ये तो बेसिकली और भी लेट पता चला, एंड इट वाज इवन लेस ड्रामेटिक. लाइक सबसे पहले मेल आया, सो आई चेक्ड इट. ठीक है, देयर वाज नो लाइक मेंशन ऑफ रैंक इन द मेल. सो मुझे लगा ठीक है, हो सकता है. पहले मुझे फील हुआ कि मे बी फ्रॉम दिस ईयर इंदौर हैज चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो मे बी दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग द रैंक्स. तो फर्स्ट थिंग मुझे ये लगी. फिर आई चेक्ड ऑन द पोर्टल, तो वहां भी कॉन्ग्रेचुलेशंस था और पे करने के लिए लिखा था, तो एज सच वहां भी मुझे नहीं पता चला. फिर वो तो आफ्टर 10-15 मिनट्स आई चेक टेलीग्राम ग्रुप्स, एंड देयर पीपल वर शेयरिंग देयर रैंक्स कि आई गॉट दिस मच रैंक, आई गॉट दैट मच रैंक. फिर मुझे लगा अच्छा मे बी जो बता रहे थे, सो दे वर इन वेट लिस्ट. तो आई थॉट दैट मे बी पीपल हु आर इन वेट लिस्ट हैव गॉट द रैंक्स. फिर अल्टीमेटली मैंने किसी से पूछा कि हाउ आर यू गाइस चेकिंग योर रैंक्स. सो फिर किसी ने लिंक भेजी, फिर मैंने चेक किया, फिर मैंने देखा अच्छा 11th रैंक है. फिर वो यानी यू फील इट, यू एम इट. जैसे आपने कहा कि like all the faculty, everyone told me कि I would do good, and खुद से भी एक्सपेक्टेशन होती है कि I am preparing for like past 2 years. तो एक सिलेक्शन होना एक चीज है, बट एक गुड रैंक इज also a very like a great importance. तो उससे और भी ज्यादा एक आपको फील होता है कि अच्छा I have not just cracked the paper, I have actually scored well, so I deserved it more. अच्छा, एक चीज है, because why are we putting Prashant over here? Because एग्जैक्टली उस टाइम पे जब प्रशांत ने हमको ज्वाइन किया था, तब सुपरग्रैड्स की जर्नी भी चालू होती है. उसी दौर में सुपरग्रैड्स की भी जर्नी चालू होती है. वी केम इनटू द पिक्चर, थिंग्स हैपन, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड आफ्टर दैट. सो प्रशांत, इफ यू कैन हेल्प अस, आई मीन कि हाउ डज दिस जर्नी बिगन फॉर यू? आई मीन प्रशांत के लिए जर्नी कैसे चालू हुई थी, एंड हाउ डिड ही एग्जैक्टली रीच इट ओवर हियर इन अ नटशेल, एक समरी के फॉर्म में, इफ यू कैन हेल्प मी विद दैट. राइट सर. सो बेसिकली आई वुड से first of all, like I was clear from class 11th when I entered, and I would say COVID was like a boon for me. Like it was a great help for me, because it made me clear that this is something that I want to pursue. I was looking for coachings, and then I came across Legal Edge, which is also a like sub brand of Prop Rankers, and it was very well
right, it was very well known. So I got to know that there is SuperGrads. I didn't know it was the first batch, but I joined in, and I would say that I have seen, like, as SuperGrads team have seen me grow. I at the same time have also seen SuperGrads grow from the initial phases where things were not say a lot not very scheduled, like things where there were ups and downs, but then I saw a proper structure getting in the way. So there was particular then fixed faculties, best faculties, say Anil sir was there, Binda ma'am was there, Raghavendra sir was there, fixed faculty. Then performance appraisal tests were started, so that we have like monthly say performance reviews, proper feedback sessions. Everything was like in the second year, everything got into a proper place. And I would say the journey with SuperGrads was actually a complete journey. I have everything, the best thing I could have, the best faculty in terms of live lectures, in terms of doubt solving. Like SuperGrads always promotes their doubt solving groups, which I would say is actually very true. The responses there are actually very, very fast, be it from the teachers or be it from your other peers who are also studying there. So in that sense, I would say my journey has been a complete journey. Okay, so he is making some very relevant points over here, because ये पुराने बच्चों में से एक है प्रशांत ने हमारी भी जर्नी देखी है completely, and today we are standing very tall students from across India, outside India. So many of the students are joining us from Gulf part, Malaysia से students हैं हमारे पास, Bahrain, and definitely ये चीज एक शोकेस हो रही है कि this confidence which we have built in is basically वो जो मेहनत जो तुम प्रशांत कह रहे हो कि we have bought in schedules, the things, and जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को वो चीज दिखाई दे रही है. एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपने मेंशन किया कुछ फैकल्टीज का नाम भी, एंड यू टॉक्ड अबाउट मैथ. एक ऐसी चीज होती है जो कि डराती है स्टूडेंट्स को, खासकर IIM इंदौर की. तो हाउ डिड यू डील विद इट, और वो हमारी जो जर्नी थी और आपकी जो जर्नी थी वो उसने कैसे हेल्प किया इन दैट पर्टिकुलर एरिया? Sir, before I answer this one, I just want to add a last point to the previous answer, that one of the best thing about SuperGrads is they are always open to feedbacks, and they actually work on the feedbacks, because this is something I have felt personally. Rahul sir used to always call me, ask ki directly जो भी है सच बता, अच्छा बताने की जरूरत नहीं है, feedback का मतलब है खराब क्या है वो बता. And whatever I told him, I have actually seen work being done on that aspect. So on that aspect as well, I would give 5-star to SuperGrads. Now coming to this maths portion, how I prepared for this, I would say the basic SSMs which are provided by the SuperGrads, by the faculty, the study material, that is enough for you to clear your basics and to get started with your preparation. So once you are done, like you would take say 6 months to complete all that, and your basics would be absolutely clear, and you would have some knowledge of the higher concept. Then there are live classes. I would say the most relevant questions which are asked in IPMAT are always done or are always taught in the live classes. I have always seen that Anil sir always takes those questions similar to which, or the same questions which have been asked, like in this year as well, 2 or 3 questions were direct same with the same same values from our say live classes in the real paper. And from my perspective, what I did was, after I was done with this, after I was thorough with this part, then I moved to say Arun Sharma, which is everyone suggests. So I did that. That helped me to grasp to higher level concepts that helped me build some strong foundation. So I would say that in that sense. And the main part for quantitative ability is that you must aim for variety of questions. So people generally, what they do is they do 100 questions of percentages, which are all of the same. So there is no point in doing that. What I did was, sorry, interrupting you in between over here, Prashant. I would like to take a feedback also on the short practice books, because you got selected in the short part, and we had delivered the books over there to you. And really, it's मैं live platform से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ exactly. So how did you exactly feel about that part also? Because मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे पास ऑल इंडिया रैंक 26 भी हमारे पास, मैं अभी साहिल से बात कर रहा था थोड़ी देर पहले फोन पर ही. So I just wanted to know the feedback on that also, कि किस तरीके से, because आप लोग short के students भी थे, you got selected in that particular batch. So let me tell you guys, हमारा एक short का test होता है, selection test होता है. तो जो internal students है, external students है, वो लिख सकते हैं. हम लोग privilege देते हैं internal students को कि वो ज्यादा वो seats occupy कर सकें. बहुत limited number of seats रहती हैं. So Prashant was one of the students जो कि short
मे बी सिलेक्ट हुए थे, एंड ही गॉट स्पेसिफिक बुक्स फ्रॉम आवर साइड जो उसके पास डिलीवर हुई, क्योंकि वो अरुण शर्मा की बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि शॉर्ट में एग्जैक्टली हाउ डिड यू फील? राइट सर, सो जैसे मैंने कहा कि वैरायटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड शॉर्ट वाली जो ऑल द बुक्स हैड अ डाइवर्स सेट ऑफ क्वेश्चंस। सो ऐसा नहीं है कि बेसिकली आपको एक ही लाइक वन ऑफ द क्वेश्चन से नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्वेश्चन से इट इज आस्किंग लास्ट डिजिट, सेकंड क्वेश्चन वुड बी नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, और दे वोंट बी ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे कि आपको लगे यार, एक होता है क्वेश्चन, आई थिंक कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर करता है, दे गेट अ सेंस कि यार ये क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, ये कभी पूछा ही नहीं जा सकता, ऐसा थोड़ी कोई पूछेगा, बट वो जो क्वेश्चन है ना, दे आर एक्चुअली वेरी रेलेवेंट। यू गेट अ फील इफ यू लुक एट the PYQs, you will see that this is the pattern that Indore has been following, and if you practice those questions, that would definitely help you say strengthen your foundation, and say boost your score by 10-15 marks. So that was one of the problems actually I once shared with Anil sir कि सर मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो कर रहा हूं पर मेरे मॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, एंड देन ही एक्चुअली टुक, आई टोल्ड हिम कि कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिनके वर्कशीट उतने प्रॉपर नहीं लग रहे, उस लेवल के क्वेश्चन नहीं है, सो ही टुक द फीडबैक, ही वर्कड ऑन दैट, a lot of those sheets were included in the short book, that practice book. So that is one thing कि बहुत बहुत relevant questions and something that any student, any aspiring student should do. वो उस लेवल के questions थे. I personally did all the questions. Doubt जो भी होता था, all were cleared. इसका मतलब ये क्लियर है. So what he's exactly saying, you guys, it's IPM short books are exactly the guide for the IPMAT exam in Indore. Okay, now moving ahead over here, because you talked about math section. परेशान एक और सब्जेक्ट करता है, वो है लैंग्वेज एंड दैट्स वर्बल एबिलिटी. बिकॉज प्रॉब्लम वहां पर ये नहीं है कि यू नीड टू स्कोर वेरी हाई, और वो एक सेक्शन है कि अगर वहां पर आप स्कोर नहीं कर पाते तो कट ऑफ इस बार तो आई थिंक प्रशांत हमारे बीच में एक डिस्कशन था वेयर यू टोल्ड मी दैट वन ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट 260 मार्क्स कुड नॉट मेक इट इनटू इंदौर जस्ट बिकॉज उसके 112 मार्क्स का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ वर्बल एबिलिटी का. सो हाउ वर वी हेल्पफुल इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड? Yes, sir. So verbal is something a lot of candidates like this have trouble with that portion, because generally हम जो schools में पढ़ते हैं, that is a different set of, like the first day, the first session I remember at SuperGrads of the English language was, first question was asked, how is this that we are going to study English is different from what you have been studying in your school, and ma'am ने बहुत अच्छा आंसर दिया था कि there you are studying a subject, you are studying English as a subject, now you are studying the language, the nuances of the language, how the sentences are to be structured, the grammatical rules, all that you are studying here. So that is the basic difference, or basically you must be clear with all your say grammar rules. You should have a book that has all the basic grammar rules, and then you need to practice. सिर्फ लिख देने से या सिर्फ जॉट डाउन कर देने से, रिवाइज करने से, you won't be able to see any actual effects on your marks or on your progress. आपको एक्चुअली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. सो जितने भी लोग मेरे से बीए का पूछते हैं, बेसिकली मैं आई हैड अ लाइक कंसिस्टेंसी और एक बेसिक रिजाइन जो मेरा था. आई यूज्ड टू डू डेली 5 आरसीज, 5 पैरा जंबल्स, 5 सेंटेंस करेक्शन, 10 न्यू वर्ड्स एंड 5 पैरा कंप्लीशंस. सो दिस I did this for 2 years continuously. Very good. So as such कोई burden नहीं था मेरे पे. It took hardly 30, 40, 50 minutes. At times, at max, it would take 50 minutes. कभी burden नहीं हुआ. And it helped me actually to improve. I could see progress day by day. It helped. कभी ये नहीं था कि यार आज तो बहुत सारा हो गया, और ऐसा भी नहीं था कि आज सिर्फ आरसी कर लिया है, उसके बाद 1-2 महीने आरसी कभी छुआ ही नहीं, फिर एक दिन अचानक मॉक में देखा कि आरसी आ गया. ऐसा नहीं था. पर्टिकुलर सेट जो हैंडल किया जा सकता है, आई डिड इट रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, तो दैट हेल्प मी बिल्ड माय कॉन्सेप्ट्स. Now moving ahead from here, बिल्कुल rightly said. तो यहाँ पे मैथ और इंग्लिश की बात हो गई है. इनफैक्ट आई come on logical reasoning also, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताऊं. So he has also got through Rohtak as well, and he has to leave that seat. कोई और ले सकता है उस पर्टिकुलर सीट को आप. लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात प्रशांत यहाँ पर, एक चीज हमेशा ये कही जाती है, और इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जो 12th में पढ़ रहे हैं, जो 11th में हैं, वो कहते हैं कि हम सर 12th पे फोकस करें या फिर इस पे करें, आप समझ नहीं आ रहा प्रिपरेशंस को. बट आपने शायद मुझे 2-3 दिन पहले ही एक पर्सनल टेक्स्ट मैसेज किया है जिसमें आपने
बहुत अच्छा स्कोर अपना भेजा था जिसमें 12th में आपने स्कोर किया है. सो ये एक जो मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स का कि वी कैन एक्चुअली कंसंट्रेट ओनली ऑन वन साइड, वी नीड टू ब्रेक दैट मिथ आल्सो ओवर हियर. सो एग्जैक्टली हेल्प विद योर स्कोर, कि एग्जैक्टली कितना आया आपका स्कोर कार्ड 12th में, एंड क्या मैनेज किया जा सकता है. इज इट इजी फॉर अस टू मैनेज स्टैंडर्ड 12th एंड टेस्ट प्रेप कंप्लीटली? Yes, sir. So first of all, I scored like 99.4% in class 12. Can you believe it, And I would guys? say 99.4 is something. मतलब उसने कहाँ कुछ गलती करी होगी कि वो 2-3 नंबर कटे हैं पूरे के पूरे 500 नंबर से. सो दैट्स समथिंग व्हिच रियली वेरी अपलॉडेबल. Excellent, Prashant. Yes. So I would say it is actually very, very manageable. And I don't want to sound like very indifferent to people who face problem, but generally मैंने ये वाली situation कभी face नहीं की. और जब भी कोई ये question पूछता है कि how to manage, generally I think ये question उनके लिए relevant है जो last के शायद 3 months में preparation चालू कर रहे हैं या उस type के. If you are preparing for say 2 years, 1 year, 6 months, this should not be a problem if you are consistent. A lot of people say that हम daily 4 घंटे 6 घंटे IPMAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, and even then they are not able to crack. Personally, मैं at max after the classes, after watching all the live classes, शायद 2 घंटे प्रैक्टिस करता था. बट the most important things जो है, जो most important questions हैं जो आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था. इंग्लिश में मैंने बता दिया, मेरा बेसिक वो था, डेली कंसिस्टेंटली करता था, एंड दैट वाज ऑल, एंड इट हेल्प्ड मी. मेरे को एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि मेरे पास एक साथ बहुत बड़ा बर्डन आ गया. सो इट वाज क्वाइट मैनेजेबल इफ यू आर कंसिस्टेंट. आपको डेली एक शेड्यूल तो बनाना पड़ेगा कि अच्छा, every day morning is for my school or for my boards exam, every day evening it is for my I would dedicate this time or allot this time for my IPMAT preparation. तो अगर आप Basically ये proper time planning scheduling ही है. करोगे So तो हो जाएगा. yeah. So what Right, he's sir. very fair point being made by him over here. एक important चीज है, अगर आप अपना टाइम टेबल मैनेज करना जानते हैं, so boards as well as this is a बहुत आसान काम है, उसको आप इजीली कर सकते हो. और ये आपसे खुद IPM ऑल इंडिया रैंक 11 तक के यहाँ पे बात कर रहे हैं. सो मेक श्योर गाइस कि आप लोग बिल्कुल IPM क्रैक कर सकते हैं. बोर्ड्स में 99.4 स्कोर किया हुआ बंदा ऑल इंडिया रैंक 11th है आज के टाइम पर. इट्स अ थिंग कमिंग आउट इन फ्रंट ऑफ यू. एक और इंपॉर्टेंट चीज आई वुड लाइक टू आस्क यू. We had introduced the mentorship thing last year, Prashant, है ना, because we wanted that, कि mentorship की वजह से students को push मिले. हमने पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स भी कराई काफी. इनफैक्ट एक पूरी तरीके से एक जर्नी बनाई थी स्टूडेंट्स की, जिसमें हम लोग उनको चेक करते बैक एंड पे. सो योर टेक ऑन मेंटरशिप पार्ट, बिकॉज मेंटरशिप प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल एज फार एज मैंने जितने टॉपर से और बात करी है. सो व्हाट इज योर टेक ओवर देयर? So जैसे मैंने कहा, SuperGrads has actually a complete, now at this moment they have, like you have a proper ecosystem. हर तरफ से आपको academically, question wise, subject wise problem है, there are faculties, there are proper teachers, doubt solving group है, and then there are a lot of things which are outside your academics, like a lot of time there are insecurities and fears कि जैसे if you are preparing for 2 years, आपको कई बार लगेगा कि यार मैं सही तो कर रहा हूँ, am I on the right track, am I actually doing any progress? So at that time mentorship actually really helps. Say Akansha ma'am was always there for say like you made it mandatory to book a mentorship session with all the mentors. So that helped. मान लो आपको प्रॉब्लम है कि I am not able to manage my boards and my say IPMAT preparation. So they help you prepare a proper schedule according to your needs, personalized to your situation. क्योंकि हर किसी की situation different होती है. Everyone has different priorities, so they help in that. Apart from that, आपको कोई टेंशन हो रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, they were there. आपको प्रॉपर कोई से मॉक्स देने में या उसमें कोई डेफिशिएंसी इफ यू फील कि यार ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, उसके लिए वो है कि फीडबैक आप दो, वी विल इंप्रूव ऑन दैट. सो दे हैव लाइक योर बैक, दे हैव योर बैक ऑल द टाइम. एक ऑलराउंड आपको सपोर्ट मिलता है, एंड यू कैन लाइक आई वुड से अगर मेरे जैसा, मुझे लगता है आई वुड, जैसे लॉट यू में से कि मैं अच्छा हूं, बट आई फील अगर कोई मेरे जैसा कर सकता है, कोई भी कर सकता है, इफ दे आर ऑन द राइट ट्रैक. The sooner you start, the better are your chances. I started as soon as I know, so I would say अगर कोई है who is
say hearing about this IPMAT preparation for the first time today, so they should start as soon as possible, because then there will be no pressure कि मैं जानता था, मैं लोग करते हैं, लोग 1 महीने में भी क्रैक करते हैं, 2 महीने में भी क्रैक करते हैं, बट आई न्यू मैं मेरे बस की बात नहीं, और मैं अपनी लाइफ चिल चाहता था कि मैं खेलने भी जाऊं, मैं मजे भी करूं, मैं हर चीज में पार्टिसिपेट भी करूं, सो आई स्टार्टेड अर्ली. All right. The next one is interesting क्योंकि रोहतक प्रिपरेशन वाले भी आपको देख रहे होंगे, जिपमैट प्रिपरेशन वाले भी आपको देख रहे होंगे. लॉजिकल रीजनिंग में भी वी हैव अ डिपार्टमेंट एंड दैट्स कंप्लीटली हेल्पिंग किड्स राइट नाउ. लॉजिकल रीजनिंग की आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से रही एंड हाउ डिड यू गेट सपोर्ट फ्रॉम अस ओवर देयर? सर एक बैकग्राउंड स्टोरी देता हूँ बिफोर आई आंसर दिस. फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना कि से आई गॉट टू नो अबाउट IPM रोहतक, मैंने पेपर देखा एंड आई सॉ दैट देयर इज लॉजिकल रीजनिंग. फर्स्ट थिंग आई गूगल्ड सम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस एंड नन ऑफ द क्वेश्चंस वर समथिंग दैट आई कुड हैव एक्चुअली सॉल्व. मुझे लगा यार ये मैं इंग्लिश कर लूंगा, मैं मैथ्स कर लूंगा, ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, ये कौन सा लॉजिक है, मैंने तो कभी देखा नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट लॉजिकल रीजनिंग इज एंटायरली न्यू. जस्ट इंटरप्टिंग यू ओवर हियर प्रशांत, एक चीज आप समझ लीजिए, एक स्टूडेंट जो कि 0 स्कोर कर रहा है वो आज ऑल इंडिया रैंक 11 मार रहा है IIM इंदौर में, और IIM रोहतक में भी सिलेक्टेड है. जिपमेट तो शायद आई थिंक प्रशांत यू डिड नॉट गिव राइट, सो IIM रोहतक में भी सिलेक्टेड है. एंड इट दैट शोकेसेस यू कि आपकी जर्नी कितनी स्ट्रांग हो सकती है. सो लेवल 0 से आप अगर लेवल हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाओ, सो दैट्स समथिंग वेरी वेरी अपलॉडेबल. यस प्रशांत, यू कैन कंटिन्यू नाउ. Yes, sir. So, जैसे मैंने कहा, I was not able to do any question, और I thought that this would be the toughest section to handle. But जब मैंने first live class attend की राघवेंद्र sir की, and he made the session so fun and the logic so simple. I remember first class was on direction sense and direction test. And उससे पहले मैंने क्वेश्चन देखे थे, एक भी नहीं हुआ, मुझे लगा पता नहीं कैसे होता है. But he made the logic so simple. Like मैं कह सकता हूँ within an year I was thorough with all the topics, बहुत क्लियर था. और मैंने एज सच लॉजिकल रीजनिंग के लिए कभी भी कोई सिर्फ एसएसएम यानी मैथ्स के लिए मैंने और भी चीजें 1-2 रेफर की अरुण शर्मा की, बट लॉजिकल रीजनिंग के लिए मुझे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी. मैं कहूंगा क्लासेस बहुत ज्यादा स्टाइल कि ही मेक्स द थिंग्स वेरी इजी फॉर पीपल. मैंने ये चीज नोटिस करी है कि वो कितना भी टफ चीज हो वो बिल्कुल आसान बनाकर सामने रखते हैं. सो दैट्स समथिंग ग्रेट अबाउट हिम. ओके. Now, the next is a very crucial part because it forms a 35%, and last year we started with the classes also of that. That's the interview preparation. So, interview preparation कैसा था, कैसी journey वहां पर रही? If you can help our students in that part also. Yes, sir. So I remember when my second year of preparation started, and Rahul sir called, and the first thing that I told him was कि सर ये तो ठीक है सर, इंटरव्यू की भी क्लासेस अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है, यू कांट से डेवलप और यू कांट बिल्ड इन अ स्पैन ऑफ से 1 week 2 week a month. It takes time, it takes longer time to actually build a solid profile or a solid personality. तो मैंने स्टार्टिंग में ये चीज कही थी. आई डोंट नो इफ दैट माय सजेशन और माय फीडबैक वाज द स्टार्टिंग पॉइंट और नॉट, बट आफ्टर दैट आई सॉ दैट देयर वर रेगुलर से each month there was 1 class, and that focus on personality development, so that you can actually not only in terms of cracking an interview but as an individual you can improve. So that was one of the plus point. And in the last phases proper guide was there. You were there, you always told what all topics to be studied, and most of the students who have actually faced interview would relate. A lot of questions were from geography. Like I remember mere interview mein personally I think they wanted to it was a stress test, but they started randomly firing countries at me and asking for the capitals, and say Taiwan was in news, so at least 6-7 countries they started with say tell me the capital of Taiwan. I said, then they asked South Korea, I told them, then North Korea, then Hungary, then a lot of countries, and I think they didn't expected me to answer all the questions, but fortunately I learned all them, and I was able to tell each and every of the capitals, so that was a plus point. Apart from that, as I told, personality development was actually a plus point. And all the interviews, like I remember I gave 6 interviews, probably 5 or 6 interviews of SuperGrads, or every like in each it was not just आपको कह दिया कि ये प्रॉब्लम है अब आप देखो, ऐसा कुछ नहीं था. प्रॉपर एक रिटन फीडबैक फॉर्म आता,
दिस वाज योर प्रॉब्लम, दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव, एवरीथिंग वाज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, इफ आई पॉइंट आउट कि ये आप में प्रॉब्लम है, ठीक है, ये तो प्रॉब्लम है, अब इसको सॉल्व कैसे करूं ये कौन बताएगा, ये एक स्टूडेंट के लिए खुद डिस्कवर करना इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। बट प्रॉपर फीडबैक दिया गया, प्रॉपर अलग अलग सिचुएशन, एक पूरा एकेडमिक फोकस था जिसमें आई रिमेम्बर आपने शायद इतने सारे एकेडमिक क्वेश्चन पूछे थे। एक तो यूट्यूब पे है ही जिसमें एचआर वाले थे जो मोस्टली मैम ने लिए थे, और ऐसे अलग अलग सिनेरियोस में टेस्ट किया गया कि मैथमेटिक हैवी वाला भी किया गया, हर तरीके से किया, और दे एक्चुअली हेल्प मी इन माय रियल इंटरव्यू। आई वाज वेरी काम दैट डे, इतना पैनिक नहीं था, और एक्चुअली जो भी पढ़ा था वो काम आया, बहुत काम आया, और लॉजिकल रीजनिंग तो काम आया। पहले मेरे 5 मिनट लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन का ही था। अच्छा। और मुझे याद आ रहा था कि जो सर ने पढ़ाया था काम आ गया, उसके बिना तो नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे प्रशांत यहाँ पर ये वाली बात कर रहे हैं, लेट मी टेल यू गाइस, ये फीडबैक हमें बार बार मिला कि सम ऑफ द क्वेश्चंस वर रिपीटेड, सम ऑफ द क्वेश्चंस वर रिपीटेड, मतलब क्योंकि हम तो ये सोच के नहीं बैठे थे कि यार IIM इंदौर में क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। वी वर गिविंग अ 360 डिग्री, हम लोग 360 डिग्री टाइप से हम लोग इंटरव्यूज ले रहे थे, जहां पे हमने सब्जेक्ट स्ट्रेस भी डाला था, जहां पे हमने ज्योग्राफी स्ट्रेस भी डाला था, जहां पे हम लोगों ने वी वर पुटिंग स्ट्रेस ऑन जीके एंड करंट अफेयर्स हेवीली। एक HR स्ट्रेस इंटरव्यू भी हमने डाला था। सो दैट वाज, और हमारे जो पैनलिस्ट थे, they were IIM pass out, FMS pass out, so they were taking along with me और अनिल सर, हम लोग उस तरीके से इसको लेके जा रहे थे। इसके साथ साथ वी वर गिविंग रिटन फीडबैक। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट इस बार हमने ऐड किया था, शायद प्रशांत आपको बता नहीं पाए, हमने IIM इंदौर के स्टूडेंट्स को मेंटरशिप रोल के लिए यहाँ पर ऐड किया, जो कि प्रशांत जैसे स्टूडेंट्स को कंप्लीटली हेल्प कर पाए, क्योंकि वो जो जर्नी उनकी रही थी लास्ट ईयर की, वो उससे काफी रिलेट कर पाएंगे। सो दिस वाज द प्रोसेस इन्वॉल्व, क्योंकि हमें पता था कि 35% मार्क्स एक बहुत बड़ा नंबर होता है, एंड वंस यू क्रैक दैट, सो यू विल बी थ्रू, नहीं तो आप नहीं हो पाएंगे, ये हमने देखा भी है। सो दिस वाज वन थिंग। 2 क्वेश्चन और पूछूंगा मैं तुमसे यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। सबसे पहले, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज जो तुमने फॉलो करी और तुम्हें लगा कि रियली तुम्हारे लिए काम किया, प्रशांत? 1-2 स्ट्रेटेजीज जो तुम्हारे दिमाग में अभी आ रही है। Sir, I don't know if it is a strategy, but consistency. I would like again and again emphasize on that, because I always believe consistency can beat hard work, and it also beats talent. Suppose कल एग्जाम है, आज आपने 24 घंटे हार्ड वर्क किया, you won't be able to crack the exam. आपने डेली बिल्डअप किया, डेली ऐड किया, अपने वैल्यू ऐड की अपने लिए, एक आप कंसिस्टेंट रहे, तो इट वुड बी अ वेरी इजी थिंग टू फॉर यू टू क्रैक द इंटरव्यू। सो दैट इज वन थिंग, बी कंसिस्टेंट। आप थोड़ा काम करो बट डेली करो, इट वुड हेल्प यू लॉट। देन हैव अ प्रॉपर शेड्यूल फॉर गिविंग मॉक्स। अ लॉट ऑफ पीपल अवॉइड मॉक्स कि यार अभी तो प्रिपरेशन नहीं हुई, अभी ये बहाना, दे मेकअप से अपने लिए ही बहाने बना लेते हैं कि आई वोंट बी एबल टू गिव, आज मुझे ये करना है, आज वो करना है, और फिर अल्टीमेटली दे फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो आप ये प्रॉपर कर लो कि मुझे मॉक देना है, मैं 1 साल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, हर महीने मैं 2 मॉक्स दूंगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल टेस्ट होते हैं वो दूंगा, और आखिरी जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा, यू हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक्स, सो दैट वुड आल्सो हेल्प यू। और सिर्फ मॉक्स देने से काम नहीं होगा, यू आल्सो हैव टू एनालाइज मॉक्स। अब प्रॉब्लम क्या है, अ लॉट ऑफ पीपल टेल दिस कि आपको मॉक्स एनालाइज करने हैं, आपको मॉक्स एनालाइज करने हैं, बट ये कोई आपको बताता नहीं है करके कि मॉक्स एनालाइज कैसे करने हैं। मैंने स्टार्ट किए, मैंने 50, 60, 70 मॉक्स दे दिए होंगे, कभी एक भी मॉक्स एनालाइज नहीं किया, पता ही नहीं था मॉक एनालाइज करना कैसे है। बट फिर आपने एक सेशन लिया था, एक बार राघवेंद्र सर से मैंने क्लास में पूछा था, उन्होंने क्लास के बीच समझाया कि ऐसे करना है, अनिल सर ने समझाया, एंड देन आपको अपनी भी एक अप्रोच बनानी पड़ती है कि मैं कैसा हूं और कैसे करूंगा। सो आई थिंक दैट शुड बी वो चीज हेल्प करी थी क्या? आई रिमेंबर, सॉरी, मॉक एनालिसिस से चीज मुझे याद आई, बिकॉज आई कुड नॉट कंट्रोल दैट। वी हैड कॉल्ड यू अ मंथ अगो, शायद 1-1.5 महीना पहले हमने आपकी ना मॉक एनालिसिस की ट्रैकिंग बनाई थी, इफ यू रिमेंबर। शायद मैंने कॉल किया होगा या आकांक्षा ने कॉल किया होगा एट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड डिड दैट आल्सो हेल्प यू? मतलब आखिरी में जो मॉक एनालिसिस, मॉक दो एनालाइज करो वाला, हमने पूरा का पूरा एक स्ट्रेटजी रखा था, राइट? इफ यू रिमेंबर, वो मेंटरशिप के अराउंड। यस सर, राइट सर। सो जैसे मैं कहा कि एक प्रॉपर था, आपने सबसे पहले एक सेशन लिया, क्योंकि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर फेसिंग कि सर मॉक्स तो दे दे रहे हैं, यू ऑलवेज एम्फेसाइज, आप हर बार ये चीज कहते हो मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, कोई कहते हैं सर ऐसे बढ़ेंगे, सर मैंने भी यही कहा था सर क्वेश्चन सॉल्व करने से बढ़ेंगे, आपने कहा नहीं, मार्क्स बढ़ेंगे मॉक्स एनालाइज करने से, एंड दैट इज वेरी ट्रू। आप जितने मॉक्स एनालाइज करोगे, आप एक्चुअली लास्ट के मेरे 2 मंथ कुछ भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, मैंने सिर्फ मॉक्स दिए, सिर्फ मॉक्स, और
दे आर एक्चुअली वेरी रेलिवेंट, क्वेश्चंस बहुत रेलिवेंट है, आप बहुत ज्यादा चीजें सीखते हो। मैं स्ट्रैटेजी अपनी नहीं बना पा रहा था, किसी मॉक में मैं बहुत कम स्कोर हो जाता, किसी में बहुत ज्यादा हो जाता। तो मैंने अनिल सर से बात की, सर ऐसा हो रहा है, मैं टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा, उन्होंने समझाया। तो आप एक स्ट्रैटेजी बना पाते हो कि कैसे देना है, और दैट वुड हेल्प यू टू बूस्ट योर स्कोर्स अल्टीमेटली। All right, Prashant, I think it is a wonderful interview. एक इसको बहुत अच्छी तरीके से एंड भी करते हैं. Your advice to all those who are preparing for 23 and 24. कुछ एडवाइस जो तुम देना चाहते हो यहाँ से, जो भी दिमाग में आ रहा है. सब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। आपने सुन लिया, आपको पता चल गया, ये नहीं कि ठीक है लास्ट 3 मंथ में देख लेंगे, कर लेंगे, मेहनत करेंगे, बोर्ड्स हो जाए। अब तो सीयूईटी आ गया, यू हैव टू प्रिपेयर, सो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। सेकेंड, बी कंसिस्टेंट, जैसे मैंने कहा, आई ऑलवेज एम्फेसाइज बी कंसिस्टेंट। डेली करो, कुछ कुछ करो, पर डेली करो। देन try to do a variety of questions instead of a particular set of questions। एक ही टाइप के क्वेश्चंस 100 करने की जगह अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस 50 कर लो, मोर देन इनफ। वो करो, एंड ऑलवेज गिव मॉक्स एंड एनालाइज मॉक्स। एक चीज जो मैंने एक पहले मॉक इंटरव्यू में भी कही थी, इनफैक्ट रेनू मैम और मैं एक मॉक इंटरव्यू ले रहे थे प्रशांत का, एंड मैंने सडनली रेनू मैम को बोला कि आप फीडबैक से स्टार्ट करो, मैं नहीं कर पाऊंगा, एंड शी आस्क्ड मी व्हाई। देन आई टोल्ड हर दैट ये हमारा स्टूडेंट है जो 2 साल का है, वी आर इमोशंस आर अटैच्ड विद हिम, सो रियली दैट इमोशन हैज द स्टोरी, दैट इमोशन हैज रियली मेड a story, and it is coming out with a fantastic result. This day is lucky for all of us. Best of luck to each and everyone who is preparing for 2023 and 24. I'm sure this interview is going to be really, really, really helpful for each and everyone who is actually thinking of pursuing his career in the field of management and preparing for IPM. That's all from my side. Thank you, Prashant, for making this day big, making this interview even bigger. Thanks a lot. Thank you so much, sir.